Okay, good morning to all of you. Am I audible to you? Mr. Ganesh, am I audible? Okay, very good. So, good morning to all of you. I am here to discuss about the BRC written examination. I think we just wait for a few minutes so that more viewers can add. And you can ask your questions if you have. You can ask your doubt. Actually, here I am to discuss about the BARC written examination. How should attempt the BARC BRC examination written examination. Uh, as we know already that gate examination for the chemical engineering branch has been completed, and everyone has done their best. So you should not worry about what you have done. You should worry only about what uh, you will do in the BRC written examination. Mr. Ganesh. So first of all, I would like to discuss ki, uh, how is the paper pattern. Syllabus of the BRC examination is more close to the gate examination syllabus. The only difference is that they will not ask you the aptitude or non-tech portion. Mathematics, few questions on differential equations and Laplace transformation and matrices uh, you may get in the BRC examination, but they are only limited. And I think already you did the gate examination. Then everyone has done the differential equations and matrices. No? So few questions, 3 to 4 questions, you will definitely get from the mathematics, but you will not get any questions from the non-tech like aptitude and reasoning. The question is purely technical. 3 to 4 questions is of the mathematics, and that is mostly from the differential equations and matrices and Laplace transformation. The BARC exam pattern consists of multiple choice questions. There is no any multiple select questions. There is no any NATs. So there is only multiple choice question is there, MCQ, objective type. And the first of all I would have discussed here, the question is of MCQ type. Second paper consists of total 100 questions. Total there is 100 questions are there, and time duration will be 2 hours. 2 hours. Now you will think there is 100 questions are there and 2 hours, because in the gate examination you have seen only 65 questions in 3 hours, but here 100 questions 2 hours. Question is also, number of questions also has been increased and the times has been reduced. It means your speed should be very high as compared to gate examination, but it's not like that. I will discuss. And each questions carries 3 mark. Each question carries 3 marks, and for every wrong question you will get penalized by 1 marks.
for each wrong question, wrong answer. Now the question is that what is the syllabus? As far as syllabus is concerned, the major part is mass transfer, heat transfer, thermodynamics, classical and solution both. CRE, fluid mechanics, mechanical operation, plant design economics, chemical technology, mechanical chemical technology, polymer, and polymer is also part of chemical technology, material science, material science. 3 to 4 questions you will get from the material science. So mass transfer, heat transfer, thermodynamics, CRE, fluid mechanics, mechanical operation, plant design, chemical technology, material science. So these are the major parts through which the question will be asked. Now the question is, what types of question they will ask you? What types of question they will ask you in the mass transfer? Basically, listen. Mass transfer consists of a number of questions, and there are wide syllabus are there. They will ask you question based on the one liner in the sense of just like a 1 marks gate examination. But few questions are very lengthy. Very lengthy means the whole screen will be totally full from the uh, languages and data. So I would not like to suggest to solve those questions because time is very less, and if you are going to attempt those questions, then definitely you will take some time to read the whole data. And in reading the whole data, you will take at least 2 minutes. So if any question that is full from the screen, full of screen, that you should not target. Listen, in first attempt. And what I told you, as per as my experience is concerned, if you follow my instructions, then in first 1 hour, as let's say your examination will start from the 9, then from 9 to 10, so total time to listen 9 to 11 a.m. So in the first round should be 9 to 10. So in first hours of the examination, you should target only those questions which are one liner, which you can easily solve with small calculation or less calculation, which are less calculative, and they are which are just like a one liner. Clear? It means, for example, suppose they ask you if q if the feed is if q of the feed is 0.2, then find the slope of q line. Clear? Then that you can directly with simple calculator is there, and you can get the answer. Sometimes they will ask you questions if hd is given, hd is given, they will also give you on one plate vapor coming, liquid leaving, or vapor leaving, liquid coming on the same plate. They will give you y and x, and they will ask you find the reflux ratio. So simply y equal to r upon r plus 1 into x plus hd upon r plus 1. You can put the values y and x, because this y and this x are the composition of vapor leaving and liquid coming on the same plate. Then you can put the value y and you can find the r. hd is given to you. Clear? And some of the questions you will directly get copied from the gate examination. You will find few questions are directly from the gate examination. So that's why for the practicing of the questions, you should only target the gate 1 mark question and your whole notes of the gate, because recently you have appeared in the gate examination, then everything is very fresh. So it take very small time to revise the whole notes, and it's a very better chance to get your confidence, because I told you the only trick is in the BARC written examination is that in first 1/2 of the paper of duration, you should only target those questions which you can from 1 to 100 you have to visit
from 1 to 100, and you should solve at least 50 questions in first 1 hour. 50 questions you have to attempt. It's very crucial, and 50 questions to be attempt, because some of the questions are very one line in the sense of they will ask you if the Prandtl number is equal to 1, then what is the thickness of boundary layer, what is the transfer function of first order system, what is the transfer function of PID controller, what is transfer function of PD controller. Clear? What is the formula for sum of year digit methods. They will give you the 4 options, like as you know, depreciation in any a year through sum of year digit method is n minus a plus 1 into n into n plus 1 by 2. Yes, no? A sum of numbers n minus a plus 1 upon sum of. Clear? So, and what they will change you, they will change you here minus 1, here plus 1, here minus 1, here plus 1, only they will change like this. So you have to go for the correct answer. What is the, they will ask you, okay, if original cost of the equipment is V is given, solid value is given, then find the expression for book value through decline balance method. Then you know V is equal to V into 1 minus F k power A. Yes or no? What is F? F is nothing, 1 minus Vs upon V k power 1 by N. Yes or no? N is the service life. So that types of formula based question they will ask you, that is only one liner, you should go and trick and go. So what I am saying to you, in first 1 hour of the examination you should only target the at least 1 to 100, and you should only target those questions which are one liner and which are less calculative. Means 50 questions you have to attempt in the first round, first 1 half. In the second you should obviously go for, because there are in the right corner you will found key which has been attempted, they green, and which has been not attempted, that is red. So you should target red ballots, and you should try to solve the questions which are somewhat more calculated, like in the CRE they will ask you find out the volume. If in the CRE number of questions they will ask you, okay, if order of reaction is more than 1, then I have a CSTR of different volumes, 2 liter, 4 liter, 2 liter, 4 liter, 6 liter, 8 liter, then which arrangement is better? The first in which arrangement is better for higher conversion for n more than 1? Then obviously since n more than 1, then you know CS should be high, and CS should be high, it means we should how it's possible to maintain the CA high? In a small CSTR first. If n more than 0 but less than 1, then what is the order? Reverse means higher order first, then higher volume first. It means 8, 6, 4, 2. Yes or no? If n less than 1, then only better option is that large volume of CSTR. Clear? Now then one question they will ask you, if n is equal to 1 and you have arrangement of CSTR and PFR in series, one is PFR then CSTR, okay, then in this case the changing of the arrangement will not alter the conversion, because for order 1 CSTR followed by PFR or PFR followed by CSTR will give you same conversion. Yes or no? At the same time they will also ask you question from the RTD analysis. So they are simply one liner questions and you should attempt those questions. Clear? So and similarly in the fluid mechanics they will ask you questions based on the property, like unit of viscosity, unit of kinematic viscosity, unit of dynamic viscosity, unit of compressibility. What is the compressibility? That means if okay, at the same time I told you in the first round, again I'm going to discuss, in the first 1 half you should target those questions which are less calculative or one liner. So when you get reached at the last, then you should found yourself key 50 questions at least to have attempted. In the next you should target for 20 questions only, 20 to 25 questions. But it's very important, 50 questions should be exactly correct.
Means accuracy should be your 90%, because I told you only out of 100 you have to attempt 70 to 75 questions, because you are, it's my guarantee you are not able to solve all the questions, because few questions are very very lengthier. So you will not supposed to solve the questions of like 90 and 90 80 plus 80 plus. Okay, so that's why your target should be solve 75 to 80 questions, maximum 80 questions, but in that 80 question accuracy should be 90%, means 70 questions should be at correct at least. And listen, if you are not solving 60 question, if you are not able to solve 60 questions, then you are not supposed, because if you are solving 60 question only, then 180 marks is there, है so you are on the border. That's why, means border means as far as cutoff is concerned, cutoff in the last year is varying from 160 to 180. That is cutoff, plus minus 2 marks is there. So in last 5 year the cutoff is from 160 to 180. It means 160 means around you should 60 to 70 questions should be attempt, of 50 to 60, 50 52 to 60 questions around, no? So that should be target. That's why obviously some mistakes you will do definitely, because it's human error. That's why I'm saying key in the first round 50 question, in second round 20 to 30 questions you have to attempt 20 to 30 questions you have to attempt in the second round. So in those questions you will find the questions which are somewhat more calculated, like they will ask you the question on the centrifugal pump, NTP, NTU, when A equal to 1, what is the formula for NTP, what is the formula for NTU. In the heat exchanger they will ask you area, for the heat transfer calculation they will give you Q, U and all, है ना? So that types of question they will ask you as per gate examination is only. Chemical technology will also cover very wide range, है ना? You should not underestimate the chemical technology, because you will find at least 10 questions from the chemical technology, including polymer, Mr. Ganesh. Including polymer you will get at least 10 questions. So in polymer basically they will ask you what is the additional polymer, condensation polymer, what is the starting material for the formation of nylon 6, nylon 66 and all, है ना? So that is very important, ठीक है? And as far as material science is concerned, material science includes 2 or 3 questions, and that is mostly ki if you increase the percentage of carbon in iron, then what will happen, है ना? So if you are comfortable in that, otherwise you can left this point, otherwise you can cover this point from the OP Gupta. From OP Gupta some of the questions are there, then that you can follow material science. Around 100 questions are there, and then you can follow. But rest part already you did in your gate preparation, so that's why you should not worry much about this. If you have any question from your end, you can please ask. Yes, in CRE, as alum Bhavana is asking, sir, CRE non-ideal part is also important. Actually, in CRE non-ideal part, the only question they will ask you like uh, dead time, है ना? What is a space? ET curve. ET curve will they will, for this ET curve, what is CT curve? Or for this CT curve, what is ET curve? 2 to 5 is there, and what is corresponding ET curve? 2, 5, like this. Are you getting a point? They will ask you mean residence time. So mean residence time is nothing. As you know, in this case, mean, because it's a symmetrical shape is there, then mean is just half of it. In triangle, how can find the, if let's say your ET curve is like this in triangular shape, then I told you to find the mean. Let's say 2 here is 10 is there, it's 12 is there. What is mean residence time? I told you just add these 3 and make 1 by 3. It's mean. 2 plus 10 plus 12 by 3, it's mean residence time, है ना? So they will not ask you very long question. If they will have asked you, then you should skip that questions. You should not solve. Any question in the BARC examination is taking more than 2 minutes, you should not attempt.
or any question which are full of the data and full of the screen, you should not attempt those questions. Okay. नहीं विशाल, as per my knowledge is concerned, there is no any questions apart from the material science. Only they will ask you question from the material science, extra topic. Because if you include the polymer in chemical technology, then there is no any extra topic. Any other question? So 1 marks question, you should only revise your gate notes, and the only the thing you should very bother is in first half you should attempt at least 50. At least 50, I told you. At least 50. If you are solving more than 50, that is better. But in second half of the examination, you should target those questions which are numerically when you are on the safer side. Means when you have attempt in the first round 60 question or 50 questions, then obviously in the second 10 question you can attempt. So you are in the safer side. ठीक है, तो 70 question you have to attempt with accuracy of 90%. Are you getting? So 30 question margin is there, that's very enough. And the questions are not very, because there is no any most of the questions are only one liner. Huh, PTC, obviously, very good, very good. PTC, I told you, na? If I forgot, I'm sorry for that. PTC. In the PTCs, they will simply ask you, ki suppose a thermometer is there, and thermometer is placed in the bath, whose temperature is 25 degrees Celsius. When I replace this temperature in another bath, whose temperature is maintained at 100 degrees Celsius, then, and its time constant is given 10 seconds, and whatever is time constant is given, then how much time it will take to respond 60% of its ultimate value and all, or to means just like you know na, y equal to m kp 1 minus e minus t upon tau, है ना? Basically step response and impulse response. Step response and impulse response based questions they will ask you. They will ask you questions ki which of the following is the transfer function of PD controller, है ना? Which of the following is the transfer function of PID controller. And the recent I told you na ki few questions, 3 to 4 questions is directly from the gate examination. Directly they will take a snapshot and they will just paste on that. No, environmental science, there is no question from the environmental science. No, it's a pure technical question. विशाल, केमिकल टेक्नोलॉजी गेट का ही सिलेबस है क्या या अलग है? एक्चुअली केमिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस एज पर गेट का ही है. पॉलीमर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछता है बस, ओनली पॉलीमर. करण सर, आईपीसी एंड एमओ विच टू बी कवर्ड आउट रिमेनिंग. प्रोसेस कैलकुलेशन, नो प्रोसेस कैलकुलेशन पूछ सकता है. यस, प्रोसेस कैलकुलेशन इज ए पार्ट ऑफ सीआरई यार. मतलब ऐसा भी पूछेगा कि कन्वर्जन क्या होगा, सपोज रिएक्शन इज लाइक, या कुछ क्वेश्चन आपको प्रोसेस कैलकुलेशन मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन. जैसा कि आपको पूछ देगा कि रिएक्शन दो बाय N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3, है ना? एंड कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इज 60%. ठीक है, and it's a 10 mole is entered, it's a 40 mole has been entered, then what is the moles of nitrogen left after 60% conversion of hydrogen, like this. अगर बड़ा क्वेश्चन आता है रिसाइकिल बाईपास, देन यू शुड नॉट टारगेट दो क्वेश्चन बिकॉज यू हैव नॉट टाइम. आप देखो ना, आपके पास टाइम नहीं है, 100 क्वेश्चन से 2 घंटे हैं, तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट कि विच क्वेश्चन हैज टू बी लेफ्ट, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं ना. 30 का मतलब 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हैज टू बी लेफ्ट. आईपीसी और एमओ अगर बाकी है तो कौन सा करना चाहिए? आईपीसी और एमओ देखो, इसमें क्या है कि क्वेश्चंस का बाइफर्केशंस बहुत ज़्यादा होता है. मींस बिकॉज कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, तो हर शिफ्ट का जो है वैरी करता है. किसी में सीआरई अधिक पूछेगा, किसी में मास ट्रांसफर. हाँ, मास ट्रांसफर में बेसिकली आपको जो है यू शुड आपको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे किस पे, एक्सट्रैक्शन पे, तो उसको टच ही नहीं करना है.
क्योंकि आप वहाँ पे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। करण, नहीं कर सकते हो अभी भाई, रिटन एग्जामिनेशन 16 को है, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स को पकड़ना है और करना है। और हीट ट्रांसफर में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे बता दूं आपको। रिटन एग्जामिनेशन में हीट ट्रांसफर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि एक स्फेरिकल बॉल, स्फेयर है, इसमें क्यूजी दिया हुआ है, हीट जनरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें फाइंड आउट द टेम्परेचर एट द सेंटर इफ सरफेस टेम्परेचर इज गिवन, ठीक है। तो पता है स्फेयर है, तो व्हाट फॉर्मूला इज देयर, टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू क्यू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 6K। ये होता है बेटा। इन सिलेंडर इट्स अ 4K, इन स्फेयर इट्स 6K, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। आपको सीधे वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डायरेक्टली। अच्छा, हीट ट्रांसफर में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि सपोज जैसे कि आपने पढ़ा होगा मीन थर्मल कंडक्टिविटी, मीन थर्मल कंडक्टिविटी कि इफ two bodies are there add in series having K1 and K2, है ना, then for the same temperature drop and for the same rate of heat transfer, what is the mean thermal conductivity of this material? So what you should do, you should replace the whole two material with a Km, ठीक है। तो what you should equate here, resistance should be equal because temperature drop is same, rate of heat transfer is same, means resistance should be also equal। तो resistance क्या होगा, it's simply and length is same here, तो basically what I'm saying to you, let's say L it's 2L, तो L by K1A plus L by K2A, this should be equal to 2L by KMA। area cancel, L cancel, then you can solve 1 by K1 plus 1 by K2 is equal to 2 by Km, solve for mean thermal conductivity, and that you should remember this is actually I think 2 K1 K2 upon K1 plus K2 ना। मिस्टर विशाल, रिटन के साथ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से मत करिए, और अगर करना होगा ना, सपोज आप 16 से एग्जामिनेशन कब है सर, नोट्स तो बहुत ज़्यादा एनफ है फॉर इंटरव्यू एंड फॉर रिटन सर। सर मेरे जो नोट्स हैं वो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए मोर देन एनफ होंगे। You have appeared in the GATE examination. Did you got any questions apart from the notes? आपने अभी गेट का एग्जामिनेशन, मैं तो गारंटी देता हूँ, आपने पीडीसी प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स के मैंने केवल 2-3 लेक्चर दिए थे, क्या आपने कोई भी क्वेश्चन प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का इससे अलग पाया? आपने हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स कोई भी क्वेश्चन इससे अलग पाया? आप उस समय शायद नहीं सॉल्व कर, अभी आपको जो पेपर मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, आप देखिएगा, आप सॉल्व करिएगा, यू विल नॉट गेट एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड दे आर कॉन्सेप्चुअल। मेरे नोट्स में ये नोट थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट भी है। अगर आपने क्लासेस किए हैं तो दे आर ये नोट्स एनफ हैं किसी भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो अभी आप इंटरव्यू के बारे में न सोचिए, अभी रिटन की एग्जामिनेशन में देखिए कि हमें रिटन में करना क्या है, हमारी व्हाट शुड बी। सर बार का पीवाईक्यू नहीं मिलता है यार, मैं बोलता रहा हूँ, पीवाईक्यू क्या मतलब, गेट का ही तो है, सिलेबस ऑफ गेट का है, तो बार का पीवाईक्यू नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतने शिफ्ट में एग्जामिनेशन करते हैं कि उनके पास पीवाईक्यू शेयर ही नहीं करते। आपको केवल गेट का एग्जाम, बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन होता है भाई। और इसमें क्या होता है कि चूंकि बच्चे जो है गेट के बाद से थोड़ा सा बच्चों का पेपर ख़राब होता है, तो थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को बैकअप करते हैं कि नहीं अब मुझे करना है, तो वो कर ले आते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके गेट का एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन वो रिटन में बार के रिटन में 200-250 एग्जामिनेशन। यस, हर शिफ्ट में अलग पेपर होता है। यस सर, 3 दिन 4 दिन एग्जाम चलता है, आपको पता होना चाहिए। इवन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ही एग्जामिनेशन जो है 2-3 दिन चलता है, इस बार का पता नहीं मुझे। तो हर शिफ्ट में, हर डे में पेपर अलग अलग होगा। आपको जो फिर कट ऑफ निकलता है वो नॉर्मलाइज करके निकलता है। हाँ, तो 2 दिन पेपर ना, दोनों दिन पेपर तो डिफरेंट होगा ना, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है,
अच्छी बात यह है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी 1990 से आए हुए हैं उनको एक बार सॉल्व कर लेना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी। अगर आपको क्वेश्चन नोट्स को भी नहीं रिवाइज करना है, केवल आप चूंकि नोट्स तो पढ़ा ही हुआ है, नोट्स तो रिवाइज ही है, केवल आपको एक बार पीवाईक्यूज को लगा डालना है, वन बाई सब्जेक्ट वाइज, अगर आप लगाना चाहते हो तो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि एक बार हैबिट में आ जाए। ठीक है, और लेकिन एग्जामिनेशन में आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट पहले राउंड में मत करिएगा। पहले राउंड में केवल वही क्वेश्चंस करिए जो सिंपल हो, जो 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाए। सेकेंड राउंड में ही आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो, जिसमें हमें, जैसे मान लिया आपने, आप उसने पूछ दिया आपसे, अच्छा कुछ चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, आपसे बोला कि पी एफ आर है और इसमें वॉल्यूम निकालना है, कन्वर्जन दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, सिंपल है, वी अपॉन एफ ए नॉट करोगे, 0 to x a डी एक्स ए अपॉन के सी ए नॉट स्क्वायर 1 - x a का होल स्क्वायर, तो वी अपॉन एफ ए नॉट इंटू के इंटू सी ए नॉट स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए अपॉन 1 - x a का होल स्क्वायर क्या हुआ, दिस इज एक्स ए अपॉन 1 - x a, यस नो। तो ये दिस शुड बी रिमेंबर कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए अपॉन 1 - x a का होल स्क्वायर इज एक्स ए अपॉन 1 - x a, एंड दिस इज टाउ अपॉन सी ए नॉट into k into c naught square, it's cancel, the tau k c naught is equal to x a upon 1 - x a, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, फाइंड द वॉल्यूम और कन्वर्जन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज सिंपली माइनस ln 1 - x a is equal to kt k tau। they will not ask you for the half order reaction and all। तो सर शिफ्ट किसी का इजी, यार ये कोई इजी या टफ नहीं होता है, वो तो इजी होगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। बट पेपर बहुत ही इजी होता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग है तो यू कैन सॉल्व। अगर ये एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए तो ये आपकी कमी है, खुद की कमी है। क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस गेट के एग्जामिनेशन का है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप एक बार देख लीजिए। गेट का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, क्या नहीं अच्छा हुआ भाई, गेट 2022 में हाईएस्ट मार्क्स 68 गया था, फर्स्ट रैंकर, ठीक है, कट ऑफ गया था 25, इस बार कट ऑफ जाएगा 27, 26 से 27 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 26 मैं बता दूं, 26 अराउंड कट ऑफ रहेगा, +-1, यानी जिसके अगर 40 मार्क्स भी आ रहे हैं दे आर अंडर 200 रैंक, जिसके भी 40 मार्क्स आ रहे हैं दे आर अंडर 200 रैंक। हाईएस्ट मार्क्स 75 +-1 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो इसके अंडर ही रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि पेपर ऐसा आया है कि आप जो है 40 मार्क्स या 45 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन द बार्क एग्जामिनेशन आई टोल्ड यू व्हाट यू शुड डू। हाँ, बार के इंटरव्यू के लिए पर रिटर्न हो जान दो, इंटरव्यू के लिए मैं कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे जो ज़रूर मैं लाइव जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को डिलीवर करूँगा, मैं ट्राई करूँगा टाइम निकाल करके, टाइम का इशू है।
ठीक है बेटे बच्चे। तो जो मेन पॉइंट है वो है आपको फर्स्ट हाफ में 50, एटलीस्ट 50 मैक्सिमम 60 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट वन हाफ में आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जो आप कर सकते हैं कि टाइम मिले तो, यानी 10 भी क्वेश्चन कर लिए, 15-20 क्वेश्चन भी कर लिए, 20 क्वेश्चन भी कर लिए 1 घंटे में तो भी बहुत है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। बड़े क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, बहुत बड़े जो फुल ऑफ डेटा हो, पूरा स्क्रीन से स्क्रॉल करना हो, उसको तुरंत स्किप मारिए, पढ़ना भी नहीं है उसको, कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। तो जो एग्ज़ाम देने जाते हो उसके पहले आपको सोचना होगा कि टाइम भी कम है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए हम कैसे क्वेश्चंस को अगर 60 क्वेश्चन भी आपने कर लिया और 60 क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ 60 क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है 180 प्लस नहीं जाएगा, 160-180 के बीच में रहेगा। मतलब रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, रॉन्ग कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि 1 ही तो नेगेटिव जाएगा, अगर सही हो गया तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, बात तो समझो। तो अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट अच्छे कर लिए हैं तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो 1-2 क्वेश्चंस में, बट ज़्यादा नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, हाँ इस बार गेट में न्यूमेरिकल ऐड ज़्यादा किया था, ठीक है, तो उससे कोई लॉस नहीं है ना, तुम्हारा रैंक तो सबके अकॉर्डिंग, सबके लिए टफ है ना, पेपर टफ हो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? तुम उसमें अगर पेपर टफ आता है तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि जो भी बच्चे ने कम क्वेश्चंस और करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, अगर किसी ने 40 से 45 का अटेम्प्ट लिया है और उसकी एक्यूरेसी काफ़ी 90% है तो उसकी रैंक काफ़ी अच्छी है, तो सेकंड डिजिट में भी रैंक आ सकता है। अगर किसी बच्चे ने 45 क्वेश्चंस 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं और उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ही कैन गेट सेकंड डिजिट रैंक। ठीक है, तो पूरा सिलेबस गेट का ही है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, अच्छी बात यह है, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। पेपर का डेट क्या है? 16-17 को, तो हम मिलेंगे 16 की शाम को मिलेंगे ताकि 17 वालों को तो हेल्प मिल जाए। ठीक है, जाइए अपना तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। थैंक यू सो मच।